Celebrating 2 years of Baatcheet, a virtual Indian chat show presented by Demonstrative Learning and title partner Unacademy. Baatcheet has had the privilege of hosting 22 exceptional personalities from diverse fields. The uniqueness and strength of every Atithi has been captured in every episode that is interspersed with surprises and heart space. Dr. Kiran Bedi's dynamic presence and Saina R. Bharucha's warmth and affection as a host brings to the viewer the real person behind the titles as they speak of their journey. The courage, the passion, the grit, the valor, the determination, the devotion, the struggles, the success and the fame. Presenting to you a glimpse of Baatcheet, triumph over trials. Get inspired. धारी माँ, हर जीवन अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ है। बातचीत वही रंग बांटेगी आप सबके साथ। हम सब एक हैं, बस सोच अलग अलग है। बटोर लीजिए उन रंगों को जो भी आप चाहें इस बातचीत से और ढाल लीजिए अपनी सोच में। यही मकसद है इस बातचीत का। आइए मिलते हैं अपने प्यारे से मेहमान से। अतिथि देवो भव। इट्स अ स्पिरिट ऑफ बीइंग सेल्फ ड्रिवन। जब आप सेल्फ ड्रिवन होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप व्यक्ति हो, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा आपका कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य आपके लिए खुशी का रास्ता बन जाता है। सुधा जी के साथ यही हुआ बेटा। वो अपना कर्तव्य करती करती इतनी खुशी पाती हैं, खुशी देती हैं, खुशी बांटती हैं। स्पिरिट टू गेन फ्रॉम सुधा जी टुडे इज कि हम सेल्फ ड्रिवन कैसे रहें। Follow your passion and achieve something in life. The only shortcut is work 24/7 all the time and follow your passion. You want to do anything extraordinary, you have to sacrifice. Those who are seeking the divine all the time, those who seek the divine feet all the time. How could someone hate in the name of a loving God? So I pondered this question, and I came to my own understanding that I believe at the very heart, at the very essence of all true spiritual paths, there is a common message, a message of love, a lesson of humility and compassion. Because I believe that God is one, and there are so many manifestations of this one God that have come to the world to teach the message of peace and love and seva, service. We understand Prakriti and Purusha, that Mother Earth and Father God or Father Krishna, they are one, and God's grace is so much coming. The Supreme Father and the Supreme Mother are providing everything for us. Yes. So to be grateful for that. At Govardhan Eco Village and myself, we are so deeply grateful and inspired by Kiran. Kiran, your life, Yes. You're really a hero for us. Your life of courage, your life of selfless service, and the substance of the greatness of India is so much preserved and expressed through your beautiful life. Saina, your appreciation as a daughter is something so very, very special. And I can see in Kiran's eyes how much her heart is sparkling with joy to see how she's given her life to human society and to the people of India. And for her daughter to appreciate so much is truly the fulfillment of her motherly heart. It's lifelong gratitude, and it cannot be expressed enough. The way we are getting your Baatcheet is getting blessed. It's a lifelong blessing.
I have to young entrepreneurs is failure is temporary, but giving up is final. So don't fear failure. Endure and make sure that you get to the finishing line. Why this man woman concept all the time? So basically, Saina, look, we are in a society that is evolving, okay? And we have actually started with a society which was very steeped in a mindset which sort of compartmentalized what women should do and what men should do. And this has been in every society around the world. Because, you know, a woman was never meant to be, or at least in their eyes, society's eyes, we were never meant to go and fend for the families. We were supposed to look after the families. We were caretakers, we were caregivers. And suddenly, in these last several decades, women have realized that, you know, they have a role which is much bigger. At least the opportunities should be given to women to pursue roles beyond the home. And I think that's where the whole narrative changes. And that's what we all have to understand, that this is about society understanding why women need to be given the choice and the opportunities to do more than what they wanted us to do. And so many of us, like your mother, like you, like myself, we now believe that we ought to be given those opportunities. We cannot be hemmed in, and we cannot be kind of confined to a space saying that this is the Lakshman Rekha beyond which you will not step out. Kiran, you're a billionaire. What does billionaire mean to you? I'm sure Saina has this on her mind. Am I right, Saina? Now that's over to you, mommy, that question. You're a billionaire, Kiran. You're a rare woman, you're the top 5 powerful women. You are world's top 25 powerful women, 5 in India, and amongst the 25 powerful women in India. My God, what does it mean to you? The wealth, the fame, the position. You got Padam Shri, you got Padma Bhushan. I think that's the ultimate for any Indian woman scientist in India today. What more? What does it make this? How do you feel about it? So, you know, the way I look at it is, yes, these are amazing recognitions and I accept them very, very humbly, because I think this is about being recognized by a much broader base of people who are actually appreciating what you're doing. To me, these recognitions are about really doing something which is making societal impact. मैं ऐसी दवाई बनाऊं जो 100 करोड़ लोग खरीद सके, और ये हुआ. बताओ. Yes. How did you make it? What I meant was that, you know, all the pharmaceutical industries the world over are only proud of billion-dollar blockbuster drugs. I said, is a blockbuster drug to be measured by the $1 billion or the billion people that it serves? That was my main message I was giving to the world, saying, why are you so fixated on the money? Why can't you be more fixated on the patients that it has to serve? My mother is a big fan of Kiranji. That's because of you, Kiran. 10 years in Delhi. She was for 10 years in Delhi, and she used to always tell me, you know, we have this amazing policewoman. You have to meet her. You have to listen to what she's saying. You have to read about her. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. We all complete each other. हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं. Thank you for your blessings. कैलाश जी, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे बच्चे ने पूछा है. मम्मी ने 2 संस्थाओं को जन्म दिया. एक संस्था को जन्म दिया 40 years ago, एक को almost 26 years ago. We reach out to 10 to 15,000 lives every day in one way or the other.
उनमें उन बच्चों में से एक कॉमन क्वेश्चन, दे ऑल आर वेरी कीन टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड। और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा, आपके बचपन से वो टर्निंग पॉइंट क्या था, आपको कब एहसास हुआ दैट दिस इज योर पर्पस, दिस इज योर पाथ? थैंक यू सो मच। मैं मध्य प्रदेश में विदिशा में एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में थे और पुलिस वाले का बेटा होने का मुझे गर्व है और आपको बेटी होने का गर्व है, तो हम लोगों का वैसे भी एक कोई डीएनए टाइप का रिश्ता है। तो इसलिए जब आपसे बातचीत हो रही है तो सवाल जवाब के रूप में नहीं बल्कि परिवार में बैठ के बातचीत हो रही है। जी जरूर। तो जब मैं छोटा था 5 साढ़े 5 साल का और पहली बार अपने स्कूल गया, प्राइमरी स्कूल, ये सरकारी स्कूल था साधारण, तो मैंने अपने स्कूल के बाहर एक मेरी उम्र का बच्चा 5-6 साल का बाहर बैठ के जूते पॉलिश करते हुए देखा। He was a cobbler boy and sitting alongside his father. And when we were entering inside the school gate, he was looking at us. वो ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे कि हम उसको कुछ नए जूता पॉलिश करने देंगे या सुधारने देंगे। हम सब लोग नए जूते पहने हुए थे, तो मैं उसकी आंखों को देखते देखते अंदर गया, शायद उसकी सूनी और सवाल पूछने वाली आंखों को भी अपने अंदर साथ ले गया। और मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि मार्ट साहब कहते थे हम कि मार्ट साहब ये एक बच्चा बाहर क्यों बैठा है, क्योंकि हम तो ये मानते थे कि सब बच्चों को एक न एक दिन स्कूल जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं, मजदूरी करके मदद करते हैं माँ बाप की। तो मैं बहुत छोटा था, कुछ बोला नहीं। घर आके मैंने अपनी माँ से पूछा, बड़े भाइयों से पूछा, लगभग सभी ने ये बात कही। शायद मैं मान भी जाता, लेकिन हर रोज सवेरे मैं उस बच्चे को देखता था और जब मैं लौटता था स्कूल से तब भी वो खुले आसमान के नीचे बिना छाते के बैठ के कुछ लोगों के जूते साफ करता था। इससे मुझे बहुत एक दुख भी हुआ और एक मन में आवेश भी या क्रोध भी आया, यूँ कह सकते हैं। मैं बड़ा विचलित हुआ और एक दिन मैंने हिम्मत करके उस बच्चे से और उसके पिता से ये पूछ लिया। तो बच्चा तो बहुत he was shy, he could not answer, but the father replied। अब भारतीय हमारे आज से समझिए कि 50-55 साल पुरानी बात है, 55 साल पुरानी बात है। तो वो अपना खड़े होके हाथ जोड़ के बोले कि बाबूजी, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मेरा बेटा स्कूल जाए, क्योंकि मेरे तो दादा परदादा पिताजी मैं सब बचपन से ये काम करते थे और मेरा बेटा कर रहा है। फिर उन्होंने बहुत ही दयनीय, बहुत ही दर्दनाक आंखों से मुझे देखते हुए उसी आवाज़ में बोला हाथ जोड़कर, बाबूजी, स्कूल जाने के लिए तो आप लोग होते हैं, हम तो मजदूरी करने के लिए, यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अब मुझे जात पात का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हम लोग तो पैदा हुए हैं सपने देखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, बड़ा बनने के लिए, और कुछ लोग पैदा होते हैं इस तरह के काम के लिए। तो रोज रोज मैं उसको देखता था और रोज रोज मुझे दुनिया को देखने का एक नज़रिया मिला। फिर मैं बाहर भी देखने लगा और मुझे लगा कि बच्चे इस तरह की मजदूरी करते हैं, कहीं चाय की दुकान पे, कहीं सड़क पर भीख मांगते हैं, और मेरा मन में ये जो विचलन है, काइंड ऑफ डेस्परेशन एंड एंगर, ये बढ़ता रहा। लेकिन आई बिलीव इन एंगर, बट आई नेवर बिलीव्ड द एंगर शुड बी डिस्ट्रक्टेड, should be violent, should be revenge। ये बैठी हैं बहन जी, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये नारियल की तरह हैं, ऊपर से इतनी पूरी आवेश में रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा भीतर जाएंगे, बात करेंगे तो लगेगा कि ये उतना ही तरल हैं अंदर से भीतर से। तो इसी तरह that was my first spark। मैं आपसे एक अपने दिल की एक बात करती हूँ, जुल्म देखकर गुस्सा आना चाहिए, जुल्म देखकर। और आई एम रियलाइजिंग कि जिनको सही मायने में जुल्म देखकर गुस्सा आता है, they become more compassionate, they become more giving, but that needs dedication, devotion and hard work।
How should a public servant, a person in public service, emerge constantly out of this sometimes pressures of illegal directions and negative situations? How? Because sometimes it's a question of your career. See, public servant is employed and has report to an officer and a senior who directs him or her कि ये नहीं करता तो फिर देख लेना. तो अब उसके पीछे उसकी फैमिली है और उसको फैमिली को भी चलाना है, घर भी है, स्कूल भी है. अगर नौकरी गई तो so all those temptations, all those pressures and insecurities. What's your larger message to somebody who's on a service and is employed and has a senior who is not aware of what he's saying or doing and he believes that मुझे तो results चाहिए किसी तरीके से? What would be your message, sister? सर्विस वर्ड हिंदी में सेवा है. सर्विस का मीनिंग ही सेवा है कि हम Yes. समाज की सेवा पर है. एम्प्लॉयड हमारा रोल है पर हम समाज की सेवा के लिए है. सबसे पहले मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आई एम हियर टू सर्व माय कंट्री, माय स्टेट, माय सिटी, माय कम्युनिटी. उसके बाद मुझे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरे हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी सारा दिन वर्क कर रहा है ना, एक भी क्षण नहीं है जब लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा. लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को भूल जाऊं और उसके अगेंस्ट कुछ करने की शुरू करूं तो आई विल फॉल डाउन, आई विल कोलैप्स बिकॉज आई एम गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ कर्मा हर क्षण काम कर रहा है, हर क्षण काम कर रहा है. जो अगर हम शॉर्ट टर्म मेथड से कुछ कमाने की कोशिश करेंगे या आगे जाने की कोशिश करेंगे, हम कमा लेंगे. बहुत लोग कमा लेते हैं उस तरीके से भी, लेकिन कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता जा रहा है. फिर जीवन में तनाव है, दुख है, अशांति है, तो कहते सब कुछ तो कमा लिया, हम खुश क्यों नहीं है, हम संतुष्ट क्यों नहीं है, हमारे घर में ये बातें क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे घर जो धन आया वो प्योरिटी से नहीं आया, कहीं उसमें कुछ मिलावट कर दी थी. तो जब कर्म में मिलावट करेंगे तो भाग्य में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा. लेकिन ये मुझे रोज बात याद करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सारा दिन में भूल जाऊंगी औरों के संग के अंदर. इसीलिए रोज मॉर्निंग में वो स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा हमेशा याद रखना है, जिन्होंने सबकी सेवा करनी है उनको पहले अपनी सेवा करनी पड़ेगी. Put the oxygen mask on the self first if you want to protect the others around you if the weather is turbulent. तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप को पहले लगाना पड़ता है. तो खुद की सेवा which means that 30 minutes for self care. और दूसरा, अगर आपका कोई सीनियर आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए कहता है, हमेशा याद रखिएगा कि सत्य की जो नाव है वो हिलती है, डुलती है, डूबती कभी नहीं है. The boat of truth can shake, but it will never sink. It will never sink. अगर नौकरी जाती है, लेकिन कर्म पर टिके रहेंगे, आपको इससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कुछ मिलने वाला है. उतना निश्चय रखिए परमात्मा में, अपने कर्मों में और अपने भाग्य में. और जब एक एक ऐसे करेगा तो ऊपर से कहने वाला भी तो किसको कहेगा. लेकिन जब उनको दिखता है कि हर एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होता है, तो देन टुगेदर वी क्रिएट अ सिस्टम. And then we say, oh, it is a system. But who's the creator of the system? I am the creator of my system. So even if I'm alone, I should stand alone. And spirituality वो ताकत देती है. हम एक अकेले और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, तो भी ठीक है, मार दे, मारना है तो, लेकिन हम अपने कर्मों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. सिस्टर से मैंने दो बातें सीखी. एक ये जो फॉल्स अपना है, एंड ऑल्सो योर बिलीफ सिस्टम, व्हाट यू बिलीव इन. जैसे कभी कोई बोलता है कि मेरे बच्चे चिकन खाएंगे तो स्ट्रांग होंगे. बिलीफ सिस्टम. बिना चोरी के, बिना इसके हेर फेर के तो आप अमीर नहीं बन सकते. बिलीफ सिस्टम. तो ये जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी की पूरी आपकी ईगो की तरफ पर्सनालिटी बनाती है. अगर ये बिलीफ सिस्टम दूसरा आएगा तो ये वाला है. तो बिलीफ सिस्टम कैसे आता है? बिकॉज ऑफ व्हाट यू फीड हियर ऑन हियर. आपने पूछा था ना डॉक्टर साहब कि दुनिया को कैसे बदलें, तो मैंने कहीं पढ़ा था 3 लाख या 1.25 लाख, आई डोंट रिमेम्बर, लोग वो संस्कार जो आप चेंज करते हो, वो जो बैड हैबिट्स या हैबिट्स आप छोड़ते हो, वो उसका असर 3,25,000 या 1.25 लाख, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड नंबर, इतने लोगों का फायदा होता है. फर्दर वो छोड़ते हो, वो छोड़ते हो. You have won 77 races out of 80, win after win.
आपने अपने आप को इतना रियल, हम्बल, ग्राउंडेड कैसे रखा सर? शाइना बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको और किरण जी को प्यार भेजता हूँ, और मुझे खुशी है कि आपने ये जो सवाल किया है, वो तो आपने मेरा एक शेर जो था वो आपने सुना ही दिया। वो शेर ये था बच्चे कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म एक उर्दू का लफ्ज है बेटे, जिसका मतलब ये है, जिसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करेक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू लेता है। कोई भी आदमी किसी फील्ड के अंदर भी अगर कामयाब होना चाहता है, हार्ड वर्क के बगैर, विल पावर के बगैर, डिसिप्लिन के बगैर कोई आदमी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। किरण मैडम, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। मैम वो टेनिस है, टेनिस से वजह You are just the same, no change in you. मैं भी काट खान दिया, जिस तरह बिल्कुल सिंह साहब काट खान दे, मैं भी काट खान दिया। Very good, अच्छी बात है। और मैं रोज एक्सरसाइज कर दिया। What is your daily routine like? कानू मिठा बहुत पसंद है, you're yet jogging, you're yet playing. हाँ बच्चे तू बड़ी मिठा बहुत पसंद है, गुड़ बड़ा पसंद है। मैंने खुशी दी गल है कि तू पंजाबी च मेरे नाल गल कीती है। बच्चे मैनू मिठा पसंद होंदा सी बचपन वेले, पर ऐसले मैं ना ज्यादा मिठा खाना ते ना ही ज्यादा लून खाना, समझदे ना, नमक जेड़ा ओ भी मैं ज्यादा नहीं खाता। मैं ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। Dr. Shetty, what an honor directly seeing you and being and connecting with you. Been reading so much about you, hearing your work. You are an angel in a white coat. To my mind, you're an angel in a white coat. And I first of all want to begin with an invite to you on behalf of the Puducherry administration. If you can address the entire medical fraternity in Puducherry. And as you know, we got medical colleges, we got thousands of medical students, we got nursing college. May I come back to you? Can we get back to you for a suitable date and time where you could address the medical community and the administration, health administration of Puducherry? It's my privilege, madam. First of all, I would like to tell you that I am a great fan of yours. And we are really, really proud of what you have done to this country. Thank you very much. It's my privilege. Anytime you ask me to address them, it's my privilege. I would say, how about helping the poor come by merit through NEET? This is my major question, Dr. Shetty. Sure. First of all, madam, I was involved with the medical education for the last 25 years. And I almost lost hope that nothing is going to happen until around 5 years ago, our government decided to abolish the Medical Council of India and form the National Medical Commission with very good people, with a progressive mindset, and the few steps what they have taken will dramatically change the way healthcare is delivered across the country, not after 5 years or 10 years, in less than 1.5 years, less than 2 years. Because now, virtually any district hospital, taluka hospital with over 100 beds can become a postgraduate institution to train a medical specialist in all the broad specialty like gynecology, pediatrics, radiology. These are the desperately needed specialties. And also the government strategy of Ayushman Bharat, it is going to be it will have a massive impact, nearly covering half the population, and we treat all those patients from the all walks of life. But all I am trying to say is that the seed has been sown, but for us to harvest all the policy changes
every citizen of the country, every the privileged person, every privileged people like us, we all have to really look at what we can do. Like you ask a simple question about how do we bring more poor children to the medical college. That is neat, and it is run in a very honest and very transparent manner. Children from poor families have option today to become doctors. There is no doubt. You will be surprised. 2 years ago, a judge in one of the northeastern hill states gave a verdict that the doctor has to give the prescription on a digital platform, not on a piece of paper. 2 years ago. So it is a reality. If there is one country which will dissociate healthcare from affluence and show to the world that the wealth of the nation has nothing to do with the quality of healthcare people can enjoy, that is going to be our country. And it is not going to take 20 years, 30 years. Believe me, it is going to happen in the next 5 to 10 years. I never dreamed to be a teacher. I dreamed to be an engineer. बचपन से मुझे टेक्नोलॉजी से काफ़ी लगाव है और मैं कंप्यूटर साइंस ये मेरा सब्जेक्ट रहा है 5th ग्रुप ऑनवर्ड से। तो मेरा उससे लगाव था, तो मुझे बिल्कुल आप चाह सकते हैं कि मैं वो इंजीनियर बनने की भी कोशिश करता। तो समहाउ मुझे वो पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन करने की सलाह दी। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि व्हाट चेंज टीचर्स कैन ब्रिंग इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट। शिक्षक की एक कितनी अहमियत होती है एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव लाने के लिए। एक एक बच्चे के पास, एक एक स्टूडेंट के पास, हर एक स्टूडेंट के पास वो हक है, क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रयास करते रहना, ये मैंने सोच लिया। Then I joined government school परितेवाड़ी in 2009. Can I please request कि हमारे इंडिया विजन फाउंडेशन के बच्चे और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के बच्चे जिनकी जननी, जिनकी फाउंडर, जिनकी मदर इज डॉक्टर किरण बेदी, वो बच्चे अगर आपकी पीस आर्मी को ज्वाइन कर सके, of course there will be a process of selection. We will follow all the method and the process. एक ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, मुझे पता है कि आप फेलो टीचर्स की ट्रेनिंग में बहुत रुचि रखते हैं, आप अपने काम को, अपनी स्किल्स को बांटते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, हमारे टीचर्स, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन के टीचर्स को आपके साथ मौका मिले एक ट्रेनिंग सेशन का। दे रीच आउट टू 4,000 5,000 चिल्ड्रन एवरी डे। ये दो चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो आनंद होगा अगर हम आपके संस्था के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ जुड़े और उनमें भी कुछ बदलाव लाने के लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके तो इससे तो बड़ी क्या बात हो सकती है। I've received a lot of love from Padma Aunty. I see softness, I see love, I see tenderness, I see courage, I see a lot of mental toughness, and I see two lives. I see grit and grace on this screen. A lot of grit and grace. That scene and that song is कुछ करना, that's the first time in my life I thought हमें भी कुछ करना देश के लिए। हमें सच्ची में ये सब मालूम नहीं था। हमारे 7 पीढ़ी क्या 70 पीढ़ी में भी कोई फौज में नहीं गया था। Something divine within you which was taking to be one day the air marshal. You know, it was to make you an air marshal, and Yes, that too the I first agree. woman in India to be so. Yes. I also feel so, because it's all God's hand, divine hand. At some point, and every point, He was there to help me. You know, in some way or the other, it was there. So AFMC made me what I am today. आपको ये वैल्यू सिस्टम नहीं स्कूल ने पढ़ाया, ना घर ने पढ़ाया, ना माँ बाप ने पढ़ाया। आपने ये सारा वैल्यू सिस्टम कहाँ से लिया? माँ बाप से ही। How? My parents. See,
My father, if we go back to that era, he could have married. He didn't. He looked after my mother. He looked after all of us. वो बेचारे Right. सुबह हम लोगों का खाना पीना बना के रात को क्या वही सांबार रसम जो बनता है साउथ इंडियन घर में वो बना रात को बनाते थे सुबह 6 बजे ऑफिस जाते थे रात को 12 बजे आते थे फिर हम लोगों को उठा के स्नान करा के खाना खिला के That means आपने पेरेंट्स के वैल्यू सिस्टम को देखा, करीब से देखा, and that is what they were not teaching you, but they were living the value system. You have seen them live the value system, hard work, sacrifice, living within means, integrity, and total service to the children. I think sincerity. I think you saw it. It's the message of आज जो education policy में ला रहा है to see by doing. You were living it, seeing it in your own home. ये जो मन की पवित्रता है, purity of mind, that is the precondition for meditation. So an absolutely honest, committed life, given to honest work, given to clarity of and purity of intention, this automatically generates purity of mind. And keeping the entire system pure in order to make this inner penetration possible. ये एक प्री कंडीशन होता है मेडिटेशन का. Many people think meditation is about concentration and focus. No, it's to do with your entire life. Because if your thought is functioning in one particular way, the emotion going in another direction, and the will functioning in some other way, you are not going to achieve the state of meditation. तो बात यही है, a totally committed life of inner striving and dedicated service, which means selflessness. Service is the best purifier. It removes the ego completely. A life of service. You can see the life of मेरी जो inspiration है मेरे सामने ही बैठी है किरण बेदी जी. A life of dedicated service naturally removes the ego. आपका purification अपने आप हो जाएगा. Karma in Indian philosophy is actually a philosophy of free will. It is not a philosophy of fatalism. It is a philosophy of free will. इसका मतलब है आप जो करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा. जैसा करोगे वैसा भरोगे. And the choice is entirely yours. मैम आपके नाम पर तो मैंने इतनी बार एक बार कुछ हुआ मुझे याद है जब माँ को ऐसा लगा कि अपना करियर वरियर इग्नोर कर रहे हैं जो भी है कुछ है मैंने इनको फोन किया शायद कहीं कुछ तो हुआ था भिंडी की सब्जी बनानी कैसे क्या बोली किरण बेदी अगर यही सोचा कि भिंडी की सब्जी कैसे बनानी है तो किरण बेदी नहीं बनती. मैंने कहा वो 5 साल से लेके मैम कितने साल तक मैंने ये सुना है कि किरण बेदी ने ये नहीं किया होगा. तो यू नो आप बिलीव करेंगे. कैन आई रीड आउट दैट पैसेज दैट आई हैव रिटन टुडे ऑन फेसबुक इफ यू परमिट मी. तो क्योंकि आई रियली वांट मैम टू नो हाउ शी हैज अफेक्टेड द होल जनरेशन. मैंने लिखा मेरी पीढ़ी की महिलाएं समझ सकती हैं और उन्हें याद भी होगा कि जब भी माता पिता चाहते कि बेटी कुछ बड़ा करे बिंदास बने आत्मविश्वास से भरपूर रहे तो बेटी से कहा जाता था किरण बेदी की तरह बनना. मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा था. मैं सिर्फ 5 साल की थी तब और पता भी नहीं था कि किरण बेदी कौन है पर ये नाम हमेशा के लिए मेरे दिल दिमाग में रह गया. 2009 में जिंदगी लाइफ के एक एपिसोड में जब किरण जी को बुलाने और उनसे मिलने का मौका मिला तो अपनी उस वक्त की खुशी और उत्साह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती. और कुछ महीनों पहले अचानक किरण जी का फोन मेरे पास आया और बोली तू सबका इंटरव्यू करती है अब मुझे तेरा इंटरव्यू करना है. ये सुनकर जो घबराहट महसूस हुई वो भी बताना मुश्किल है. थोड़ी डरी हुई हूँ कि किरण जी और उनकी बेटी साइना मुझसे क्या पूछेंगी पर एक अजीब सी खुशी है ये सोचकर कि जिस महिला के लिए मेरी माँ ने कहा था कि उन जैसी बनना मैं पुलिस अधिकारी तो नहीं बन पाई पर इतना तो बनी गई कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने और मेरा इंटरव्यू लेने लायक समझा. लाइफ डज कम फुल सर्कल. जय हिंद सर. जय हिंद मैम. जय हिंद मैम. जय हिंद एंड जय हिंद टू यू साइना. थैंक यू. बहुत हटके होता है दिल और दिमाग एक सोल्जर का और उसके परिवार का. सर व्हाट इज द माइंड लाइक of a soldier and the family strength behind a soldier? How does a soldier think? He's every moment ready for sacrifice. I think army is not a profession. It is a way of life.
it is, in the corporate job, in the corporate sector, or any other walk of life, you would enrich yourself, gain knowledge, and if it is in the interest of your career growth, you would actually even shift your job or change tracks. In the army, whether, and I'm sure it goes on with other forces, the police as well, where you continue to serve. You told me the mind of a soldier is brilliant, beautiful. I think one of the finest definition I've heard is that army is not a profession, it is a way of life. Now, Saina, I want to share with you something more about General. Is how he brought about the tall memorial. Let's ask him, because the memorial he was interested to come up with, it could have been as short as he and me. But why do we have a tall war memorial today? I think the country owes it to General. General, would you like to share this with us? The National War Memorial, as you see it close to India Gate today, is a matter of pride for every Indian today, because we pay homage to all those fallen soldiers who have given up their lives, made the supreme sacrifice for the country after India got independence. So everyone, in all the wars, in all the operations, in all combat, people who've lost their lives, their names are there. Each one has a brick. Thank you, my child, for making me meet our hero, a national hero for every youth in this country. A great human being and a strong professional and a lover of this country. How he saved our spices from getting patented. I mean, he fought single-handedly with his team. So, Bete, thank you so much for bringing me once again in connecting with him. Thank you. The feelings are entirely mutual. As I tweeted today, the one and only, the icon. We have respected you for what you stood for, your profile in courage. You're an exemplar, so it's my special privilege to meet you digitally today. Thank you for your love and your blessings and your prayers all the time. Your presence removes all doubt. Trust. Just you're coming into something. Just your presence removes doubt. And the feeling is कि सब ठीक हो जाएगा. How important it is for innovation to be constructive. Each innovation, I believe, is backed up by an emotion. Aspirations are your possibilities. Keep them high. Very simple. The second is, like instant coffee, there is no instant success. All right? Like I have worked 24/7, like I give the example. You have to work. Accepting that, my appeal to the young people is that work hard in silence. Let success make all the noise. Because we start making noise even before success. The third is purpose, perseverance, and passion. They have to go together. There has to be a big purpose in life. All right? जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं ना, North Star, वैसे होना चाहिए. And perseverance, because winners are never quitters and quitters are never winners. So that's very important. The fourth is, you keep on knocking on the doors of opportunity. They don't open. Create your own door. आप सबको जयधारी माँ, आप सबका स्वागत है. आज बहुत पवित्र दिवस है, उपवास है, आज करवा चौथ का उपवास है. हम इस दिन की पवित्रता को नमो करते हैं. आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला. हमारे आज की अतिथि उषा उत्तुप जी हैं. Absolutely brilliant. Thank you to to all of you for having me on Baatcheet. Really, it's such a lovely platform and so beautifully done. Thank you so much for all the wonderful things that you've done for me. Thank you. And I'm so touched and really moved that I could get an opportunity to be with you and your daughter, lovely daughter, on Baatcheet, because
it's been followed by so many people. पीछे पीछे आंदा मेरे चाल भी आए पीछे पीछे आंदा मेरे पैर भी आए तेरे वाली देखदा आई वे कि मेरा लौंगा बच्चा निका मारदा निका मारदा आई वे कि मेरा लौंगा बच्चा किरण जी आप आप मुझे बुलाएं और मैंने आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आई एम a huge fan of yours from the time that I've come to know about you from the sheer amount of grit and courage that you've had with everything you've done in your profession. You're taking on people because you were on the side of right and winning and the kind of strength that you have, the kind of conviction that you've had, it's exemplary and legendary. So more than anything else, it's a complete honor and a privilege for me to actually be a part of this event and to speak to you, Kiran ji. And Sana ji, thank you so much for that wonderful introduction. आप जिस तरीके से मुझे मेरा इंट्रोडक्शन करवा रही थी, शब्दों से ज्यादा आपके आवाज में जो प्यार और आदर था वो मुझे ज्यादा छू गया. बहुत बहुत शुक्रिया. आप प्लीज हमारे यूथ को जो आपको आइडियलाइज करते हैं उनको बताइए कि कितनी मेहनत लगती है टू बी माधवन, कितनी मेहनत लगती है टू बी हु यू आर, और कितनी सीख लगती है. यू लर्न ऑल द टाइम. तो दे सी a persona of you which yes attracts them, but you are your essence. It takes 25 hours a day. So guide them. थैंक यू सानिया. इससे पहले कि मैं उनको गाइड करूं, ये जानना जरूरी है कि मेहनत का मतलब क्या है. मेरे हिसाब से मेहनत जो लोग कहते हैं वो is a dedication and time invested in something that you have to accomplish. अगर जो आप अचीव करना चाहते हैं वो एक ऐसी चीज है जो आप एंजॉय नहीं करते, जो आपके लिए नहीं बने हैं. हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता. मुझे पूरा यकीन है कि किरण जी जिन्होंने जब शुरुआत की थी उनको नहीं पता था कि वो इतनी पावरफुल और इतनी सक्सेसफुल होंगी. जीने के जो तरीके हैं वो बस बाकी लोगों से अलग हुआ होगा. मेरे लिए भी यही था. लोग मुझसे कहते हैं कि आपने बहुत हार्ड वर्क की, आपने बहुत इंडस्ट्री में आपका कोई नहीं है फिर भी आप आए और मेहनत की. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मेहनत की. एक्चुअली सच तो ये है कि मैंने जो भी किया, जो कुछ भी मैं करना चाहा, मैंने बड़े दिल लगा के की. और अगर ऐसा नहीं है कि मेरे पास फेलियर्स नहीं है या मैं नाकामयाब नहीं रहा, लेकिन दो चीजों की वजह से मैं बचा रहा, वो ये था कि भाई जिज्ञासा. कभी आप आराम से अगर बैठे हो तो कुछ सीखने की इच्छा कि कुछ नया सीख लूं. my day is successful if one of the three things happen. One is I'm able to experience something new, or I'm able to give somebody a new experience that they've never had in their lives, or the third thing is I meet somebody I want to be in touch with for the rest of my life. When I wake up in the morning, there's a prayer that I say to my God, and I thank Him. More than anything else, the most overwhelming emotion that I have is gratitude. So I thank Him, and then when I have a bath and I come out, I acknowledge it and I thank Him. And when I go to sleep again, I say, "Wonderful day, thank you for saving us." And thank Him. So I think this feeling of gratitude that I constantly keep within my heart, close to me, and feeling almost like I don't deserve all the success that I've got. It's only because the blessings of either the elders in the family and in the society, and that of the good Lord, has probably helped me ground myself and wake up and think there's another opportunity tomorrow. Gurudev spoke about the Ramayana happening right now in our mind. How it is like Rama is representing ourself, and then Sita is the mind, Lakshmana is the awareness, and Hanuman is the Mukhya Prana, the breath, and then Ravana is the ego. So when the ego kidnaps the mind, then the soul is restless, mind is restless. So with the help of the breath, that is Hanuman, the mind is
it comes back to the soul, self. So this is the whole Ramayana happening in our life. I want to salute you, sir. Dr. Kiran Bedi, we all need to salute you. No, sir. You are the foremost and finest police officer this country No, has sir. ever seen. A billion salutes to you, sir. A billion salutes. Thank you, Dr. Kiran Bedi. When we joined the academy, we were told the motto is service before self. And that means we are here to serve, not to be served. And then when we go to the Indian Military Academy, there we are told your country comes first. The people of India and the men you command come next. You come last always and every time. We are taught to respect our seniors. We are taught about self-sacrifice. We are taught about honor. We are taught about respect for your seniors, for old people, women, children. We are taught about commitment, dedication, professional competence. And we are told that there's an enemy out there looking to kill you. What are you doing about it? Which means you have to train and train hard. But thank you very much for such a warm welcome. Thank you. Thank you. It's a balle balle. For us, it's a balle balle. I started off at 20-year-old thinking cooking is science. You know, by the time you're 30, you realize, no, yaar, it can't be science. It is art. You know, by the time you're 35, you say, no, yaar, it's not just art also. It's a lot more than that. By the time you're 45, you just realize that cooking is basically the reason for the world's existence. अरे कुकिंग की भावना है, ingredients बाद में, emotion in the food, the prayer in the food, the love in the food, the ras in the food, more than the ingredients. I'm just thoroughly loving it. I think it's a great message to every mother, father, anybody who cooks. Okay, why is the food being more tasty? Because the ras has gone in the food. Lovely. मजा आ रहा है. नहीं, वो कहते हैं ना, पहला कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि भाई ਜਦੋਂ पुराने टाइम में जब कमी होती थी तो and there's a lot of stories like this in Italy also in the Second World War time. ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੂਣ ਚ अपना पानी ਚ लूण मिर्च पा के दे दी थी, ਵਧੀਆ स्वाद आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. You know, जिनके हाथों में बरकत होती है वो पानी में नमक मिर्च डाल के भी सूप बना लेते. It depends on what you mean by struggle. Everybody struggles. There are people who were in worse positions than I was, and should I make my story the story of struggling misery? No, everybody goes through struggles. All I'm saying is, in the simplest way possible, that, and I'm not good at quotations, but this is one quotation that I love very much. There are two, but I'll tell you what the other one later, is that the slow is the quickest way to the top. And I just love that, because you takes you a lifetime to become an overnight success. So when I got into the movie, say, wow, your first movie did so well, you're an overnight success. I said, sure, it took me a lifetime. Now, but the point I'm making is that struggles have to be there. Without the struggle, I think the sweet smell of success has no value. The danger in struggle is you shouldn't feel victimized. मेरे साथ ऐसे हो रहा है, देखो ना मेरा प्रॉब्लम यही है. People when they start, मेरा प्रॉब्लम ये है ना, मेरे घर वालों मेरे सपोर्ट नहीं करते, मेरा प्रॉब्लम यही है, मुझे पैसे और मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्टर. मेरा प्रॉब्लम नहीं यही है कि मेरे पास कोई बिग नेम नहीं है जो मुझे. Everybody has their share of problems. People do things without arms and limbs and money and much worse. What are we grumbling about? What are we grumbling about? That you didn't find success a few years earlier. You didn't. Sorry, I'll correct myself. Fame. Didn't find fame a few years earlier. I think success is fighting to make sure to move forward, to learn something new,
that you can be proud of. Whether you become famous or not should not matter. But struggle is a time to learn. Struggle is a time to sharpen your tools. Struggle is a time that when you get famous or known or whatever, you are prepared to deliver and you don't enter with anger. You are the architect of your own misery. You are responsible mostly for your own troubles. Yes, there will be problems, there will be money problems, there will be problems of यहाँ तक आया और नहीं हुआ, बहुत सबके साथ होता है. But if it happens regularly, it is because of your negativity and because you feel that you're victimized. Don't be victimized. I already have 5 quotes from you. Slow is the quickest way to the top is brilliant. Struggle should not make you feel victimized is brilliant. Success is to learn something new every day is brilliant. Struggle is a time to sharpen your tools is brilliant. I think these are going to be quotable quotes of Miss Irani. आज का बातचीत हम सबके दिल को छुएगा. It will make us relook at a lot of aspects of our life which we are overlooking. Look at them, relook at them. Thank you. When did you as a child recognize? Did you spot that one day you make it this big, the Padma Bhushan of the day, the Arjuna Award, the Khel Ratans, the Dronacharya of Indians badminton? Did you ever get the flash that this is your destiny, or it could become your destiny? Or have you just flown and grown with this destiny and let it be? Ma'am, every step I climbed in my life, and honestly, the next step seemed possible. I have not looked back and seen, or neither have I dreamt, or do I intend to dream, because my dream would have never been so big. I really, so I'm scared of dreaming because I'm scared of dreaming too low. So I just continued the day after day, and I think it's taken me much further than what I would have as a 10-year-old. If I had thought or seen people around me, I would have max thought of being a state champion or a national champion. But I wouldn't have thought of me becoming an All England champion or thought of actually building so many players or being able to affect the lives of so many people. So I take each day, give it all I have, and be honest to do it, and actually ask this question: if I don't do it, who will do it? Kind of a thing. Am I shrinking away from my position? And if I don't do it, who will do it? Swamiji, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, for those who have conquered the mind, it is their friend. For those who have failed to do so, it is their enemy. How does one nourish one's own self with the right kind of thoughts? How does one nourish one's own self? Yes, Saina, this mind is such a powerful thing. The Western philosopher John Milton had said that the mind is a place of its own, and in itself can make heaven out of hell and hell out of heaven. So we have people in the world who had everything, but they did not tend to the garden of their own mind. John Rockefeller, he was, of course, the wealthiest man in the world in his times, but historically he is considered one of the wealthiest people ever. And he said that I had millions, but it did not bring me one day of happiness. So the reason was that there's a difference between our standard of living and the quality of our life. Money can increase the standard of our living. It can give us the goods, the luxuries, the necessities we want. Money can help somebody buy a house, but money cannot ensure a loving family. Money can help us get medicines, but it cannot bestow good health. So that quality of our life is the real thing. And that depends upon the mind.
So Sri Krishna in the Bhagavad Gita, he has said that, look, Arjun, if you do not control your mind, it will become your enemy. The energy is so beautiful here. So I'd like to sing 4 lines of a spiritual invocation, and then of course I'll sing Kalhona Ho for you. Shubhanayana Karunamaya Gauri Harashi Varada Vinayak Shubhanayana Karunamaya Gauri Harashi Varada Vinayaka Omkar Ganapati Omkar Ganapati Adhipati Sukhapati Chandapati Gandhapati Leena Niratara Ho Leena Niratara Ho Sura Niragasa Ho Sura Niragasa Ho Ganapati Sura Niragasa Ho Moria, Moria, Ganapati Bappa Moria, 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 Ganapati Bappa Moria. Gajavadana tu sukha karata, Gajavadana tu dukha harata, Gajavadana Moria, Moria, Suranira Gasa, Ganapati Sura चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो. Thank you so much, Saina. Thank you so much, Dr. Kiran Bedi, for making me part of this really spiritually enlightening talk. The energy is very evident, and you know, the Guru whom you all follow, please give her my pranams. And yeah, and I'm really, really honored and privileged to be part of this show today. As we celebrate these 2 years of Baatcheet, it's time to keep the conversation going so that more and more people can get motivated and get inspired. Baatcheet, triumph over trial.